सो ये गाइस, अब इस वीडियो में मेरे साथ है मुकुल. सो हाय मुकुल. हाय सर, कैसे हो? सब बढ़िया. सो इन दिस वीडियो मुकुल इज गोइंग टू आस्क मी ऑल द क्वेश्चंस जो लोग सबसे ज्यादा मेरे से पूछते हैं. सो वी समराइज्ड ऑल द क्वेश्चंस दैट वी गेट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑल द अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और हमने समराइज करके आज एक लिस्ट बनाई है और हम अपनी वीडियो के लिए पहला AMA करने लगे हैं. So let's find out what most of the people are asking from Ashu Gandhi. So आप कॉलेज ड्रॉपआउट्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? What do you think on college dropouts? So this is the question that I've been asked the most because मैं थोड़ा सा ट्रॉल करता हूँ इस मतलब ऐसे जो बहुत ज़्यादा माइंडसेट के होते हैं कि that we can drop out of the college and we can do a lot of stuff. So basically मेरा इसमें point of view and perspective ये है कि at the age of 19-20 we definitely think that we're gonna make a lot of money, but एट द सेम टाइम हम फ्यूचर में कभी भी कॉलेज को नहीं जाएंगे वापस, बट वी कैन ऑलवेज लाइक डू मोर हार्ड वर्क इन द फ्यूचर लाइक व्हेन वी आर 25, 26, 27. सो माय पर्सपेक्टिव इज कि बाद में तो तुमको काम करना ही है, देन व्हाई नॉट एंजॉय द कॉलेज लाइफ इवन इफ यू लाइक इट और नॉट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट आपको उस एज में वो एक जो टाइम पीरियड होता है आपको कॉलेज का लाइफ का, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप पैसा नहीं कमाते हो बट यू रियली लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई वुड से दैट इफ यू आर प्लानिंग टू ड्रॉप आउट ऑफ अ कॉलेज, स्किप इट, क्योंकि यू आर नॉट गोना गेट दैट टाइम बैक इन योर लाइफ. So the next question is, what do you think? क्या Instagram सच में सैचुरेट हो गई है क्रिएटर्स के लिए? Well, I would say yes, because आजकल जिसको देखो वो 100 के ऊपर है. So even like if we see our own roster, तो हमको बड़े बड़े हैं creators who are 1 lakh above. But at the same time, I believe कि जो genuine creators हैं और having a real audience, तो वो अभी भी market में कम है. So saturation point when it comes, yes, बहुत ज़्यादा influencers हो गए हैं, but when we talk about the creators, तो कुछ नहीं है. So I don't think so that creative part is ever going to be saturated. Just see कि आप influencer हो या creator. So now the third question is, क्या own voice creator, हमारे जैसे own voice creator से कोई scope है Instagram पे या फिर YouTube पे ही shift होना पड़ेगा? So नहीं, I think so. Own voice creators, it can be of any niche, let it be शायरी or you can say edtech, कैसे भी creators हो. So I believe really they are having a very nice scope on Instagram as well. Not only on YouTube but on Instagram. क्योंकि आजकल many brands are coming out on Instagram to search edtech creators. तो definitely it's a scope, but also ऐसा नहीं है कि आप बस वीडियोज़ ही बनाई जा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको ब्रांड्स आगे से आएंगे या आपकी एकदम ग्रोथ हो जाएगी. You really need to engage with the community, you need to hunt the brands, and you need to like put more efforts apart from creating videos. मतलब गिव करने की ज़रूरत नहीं है. नहीं, definitely not. And edtech creators specifically, edtech creators get a lot of money. So like it's like what I came up with, 100K का जो creator होता है edtech में, he is charging somewhere very similar to 1 million followers creator who is in the entertainment niche. So पैसा ही पैसा है. बिल्कुल. So the most demanding question is कि क्या किसी को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी खोलनी चाहिए आपकी तरह? अगर खोलनी चाहिए तो कोई टिप्स हैं? So I would say कि यार मेरे कॉम्पिटिटर क्यों बन रहे हो यार. मत खोलो प्लीज. नहीं. So like jokes aside, it's an amazing industry. You should really try out if you really want to come in it. But थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. There are a lot of big players already in the market. But ऐसा भी नहीं है कि मतलब you can't think कि आप इस इंडस्ट्री में एंटर ही नहीं कर सकते हो. There are a lot of loopholes. And the second thing is कि स्कैम्स वगैरह कुछ होते हैं? Scams वगैरह yes definitely, but most of them are done by the freelancers and not the agencies. So जो freelancers होते हैं एक आधे influencer को लेके बस उनका करते हैं, so they are having those problems. When it comes to the agencies, the main problem is that पीछे से मतलब brands बहुत कम हैं and influencers भरे पड़े हैं. So if you are like someone who's having 50-60 creators in their agency, so getting brands to them, I think so is a problem. So you should like have limited influencers जिसको आप काम भी ला के दे सको. And the second thing is you really need to focus on the creators who are having the genuine audience. Avoid lip sync, I would say.
अगर लिपसिंग में जाना है तो देन यू शुड ओनली हैव द स्कोप ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री, तो आप थोड़ा सा उसको अवॉइड करो इफ यू वांट टू गेट मोर ब्रांड्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या स्नैपचैट टक्कर दे सकता है इंस्टाग्राम को? बिकॉज काफ़ी न्यूज़ आए थे पहले कि इंस्टाग्राम के ओनर्स ने उसे खरीदने की कोशिश करी थी पर उन्होंने मना कर दिया, और आज बहुत एडिक्टिव प्लेटफॉर्म है। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? So Snapchat is coming up with amazing features. This is Spotlight IR, which a lot of people and creators earn like hell on Snapchat. Literally. So मतलब it's like a booming platform, and what I think is कि Snapchat जो users होते हैं, they are, you can say, the cream of India is on Snapchat. Okay. So if everyone is on Instagram, so कुछ selected percentage ही होगी, let's say 80% is on Instagram, so 20% is on Snapchat, but वो जो 20% है, they are having the purchase power, like buying power, ये सब कुछ cream है। ATM machine कह सकते हैं क्या? So if you're a brand, then you should definitely try out Snapchat. It's an amazing platform, and you're gonna get ROIs amazing over there. So if you are anyone else who is selling the services, so try out Snapchat. And about the ads? Snapchat ads? It's expensive as compared to Facebook, but the results are amazing. Like जहाँ पे तुम 1000 रुपये में you can say you reach out to 50,000 people on Instagram, आप वहाँ पे 1000 में सिर्फ 20,000 लोगों तक भी पहुँचोगे, but the sales is double or triple as compared to Facebook. अच्छा, return अच्छा है लेकिन. Yes, return. So ROI is really good on Snapchat because again the cream is on Snapchat. So yes, the ROI is good. अच्छा, जब आपने सेल्स की बात करी थी तो ज़रा ये भी बता दो कि हमारे जैसे टीनेजर्स कैसे अर्न कर सकते हैं सोशल मीडिया की हेल्प से? So there are basically 4 ways जिससे आप पैसा कमा सकते हो. You can sell a product, you can sell a service, या आप as an affiliate marketer किसी और का प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, और you can like act as a virtual assistant for someone जिसमें सर्विसेज भी उनकी है and you are just the one who is managing some part of that particular service. So these are the 4 ways जिससे हम कमा सकते हैं, but we really need to understand this thing कि Instagram में most of the audience is from 13 years to 19 or 20 years at max. Okay, बच्चे. So if we are having a product जिसमें बच्चों की attraction ज़्यादा होगी, that is going to perform really well on Instagram. But the other products जहाँ पे थोड़े से बड़े लोग इंक्लूड हो जाते हैं, यहाँ जो हम कहते हैं कि जिन लोगों के पास बाइंग पावर होती है इंडिया के अंदर, so that is basically after 22, क्योंकि वहाँ पे लोग कमाना शुरू कर देते हैं. तो for those I would recommend Snapchat और I recommend LinkedIn. तो वहाँ पे ज़्यादा लोग मिलेंगे जो आपके प्रोडक्ट को जल्दी बाय कर लेंगे as compared to Instagram. So it's like a small thing. If you are really concerned about the reach and popularity, go on Instagram. And if you are concerned about the sales, then go on either LinkedIn or Snapchat. तो आशु सर, आप ब्रांड्स के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म रिकमेंड करना चाहोगे, और इसी के साथ सर्विस का भी कुछ बता दो. So let's say, so if your brand is new, so I recommend you to be on Instagram, क्योंकि पहले रीच होनी चाहिए, मतलब you और brand should be popular amongst the audience. और सबसे ज़्यादा इजी वे यही होता है कि हम बच्चों के अंदर पॉपुलैरिटी जगा दें उस ब्रांड की. But at the same time, if you are more like concerned about कि मुझको सिर्फ अभी रेवेन्यू चाहिए, then you should go to YouTube. That's a better platform. और LinkedIn भी बहुत ज़्यादा अच्छा है when it comes to the selling part. अगर तो आपका B2B है business, then definitely you only need LinkedIn. Nothing else, no other platform over there. So apart from that, for the service sellers, you really need to understand what your target audience is. If your target audience is again a teenager, तो फिर आप Instagram पे जाके इनको reach out कर सकते हो. If it's someone who is 25 to let's say 30, 35, you really need to be on YouTube and you need to be on Home. सो गाइस, ये थे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो हमने पिक करे थे. इसी के साथ आज का EMA फिनिश होता है, एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट EMA के अंदर. तब तक के लिए आप कमेंट्स में अपने EMA क्वेश्चंस बताओ. लेट्स गो बियॉन्ड द बेस्ट.